Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss Cambridge IGCSE paper 2 October-November 2022 variant 2. We are going to perform task number 6 presentation. You are going to create a short presentation. All slides must have a consistent layout and formatting. Okay, create a presentation of 6 slides using the file n2202result.rtf. So you have to open the power presentation and open the new slides and go to the slides from the outline. You have to open the file. The file name is October 2 and I have to open the file n2202 result. Okay, first of all you have to delete the first file, the first slide, and these are the slides 1 2 3 4 5 and 6. The next point is use a master slide to display only a thick black line 3 to 4 point wide horizontal line across the width of the slides about 3 cm from the top. Go to the view option and open the slide master and select the first one of the slide master of the slide and insert. I have to open the ruler and place a 3 to 4 centimeter line approximately. This is a line and it will be the 3 to 4 point wide, 3 to 4 point wide, and it's where the 3 to 4 point wide, and its color is black, and you have to outline the black line. Okay, the next point is the text 2021 event statics on one line in a large black font aligned to the top right. Okay, we have to copy this text and place into the right. First of all you have to insert a text box and then copy the text, and the width of this text will be 32. It should be look like this. And this text must be above the 3 to 4 point lines. Okay, automated slide number on the top left. We have to insert the header and slide number, and also is your name, center number, and candidate number, and also you have to place the footer, write the name and so 0000. Okay, apply to all, and मुझे जो है इसमें डेट नहीं रिक्वायर्ड, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, और स्लाइड नंबर जो है मुझे इसका टॉप लेफ्ट पे चाहिए, तो मैं इस डेट को यहाँ पे ले जाता हूँ टॉप लेफ्ट में. ज़रा चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास इसका फॉर्मेट सही आ रहा है. व्यू में जाने के बाद आप इसको नॉर्मल स्लाइड्स पे ले जाएं तो हमारे पास ब्लैक लाइन और इसका पेज नंबर और इसका फुटर जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है. ओके,
Make sure must slide items appear in the same position on every slides. No items overlap on the slides. Done. Okay, use the data in the file N2 22 outcomes to create a vertical bar chart for only the top 6 ranked countries. The chart must displays. Okay, हमें ये वाली फाइल ओपन करनी है N2 202 outcomes. तो हमें सबसे पहले हमें अपने फाइल्स में जाना पड़ेगा. हमारे पास फाइल है इसमें हमारे पास फाइल थी एक्सेल की और एक्सेल की फाइल में आउटकम्स ये वाली फाइल. Okay, this is a file of and what task I have to perform to create a vertical bar chart for only top 6 ranked countries. हमें 6 कंट्री का इसका करना है, ड्रॉ करना है. These are the top 6 countries 1 2 3 4 5 and 6. और साथ हमें इसके साथ हमें क्या करना था, vertical bar chart for only the top 6 ranked countries. The name of a country, country axis and average competitors. तो ये हमारे पास यहाँ से एवरेज कंपटीटर्स ये वाला कॉलम सेलेक्ट होगा. तो आपने पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है. कंट्रोल की प्रेस करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है 6 पॉइंट तक. ओके, उसके बाद आप चले जाएंगे इंसर्ट पे. इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आप यहाँ पे वर्टिकल बार चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर देंगे. ये हमारे पास इसका एक चार्ट आ गया. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज लेबल द चार्ट एज फॉलोज. चार्ट टाइटल क्या होना चाहिए हमारे पास, इसका ये टाइटल होना चाहिए. यहाँ से इसको हमने कॉपी किया और इसकी हमने एक्सरसाइज पे चले गए तो इसका टाइटल हमने सिलेक्ट करके इसका कर दिया कंट्रोल V. ये हमारे पास इसका टाइटल डिस्प्ले होना शुरू हो गया. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू एक्सेस टाइटल एवरेज पॉइंट कैटेगरी एक्सेस टाइटल. हमें इसके एक्सेस डिफाइन करने हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके लेबल्स ऑप्शन पे चले जाएं यहाँ पे और यहाँ पे एक्सेस टाइटल पे आ जाएंगे. तो हमारे पास दोनों एक्सेस टाइटल, क्योंकि ये कंट्रीज़ का है यहाँ पे हमें कंट्रीज़ का प्लेस करना है और इसके लिए हमें यहाँ पे कंट्री का टैग लगाना पड़ेगा. इसको कॉपी किया जाएगा और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे. और इसी तरह हमारे पास एवरेज के लिहाज से उसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C के साथ और पेस्ट कर देंगे. ओके, हमारे पास टाइटल एक्सेस भी आ गए. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्ले ओनली द डाटा वैल्यूज एट द टॉप ऑफ ईच बार. तो वेरी इजी, आपने किसी भी इसके ऊपर क्लिक करके के बाद आपने प्लस के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने डाटा लेबल्स कर देंगे. इसको चेक कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यूज डाटा लेबल्स आना शुरू हो जाएंगे. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेट द वैल्यू एक्सेस स्केल्स टू डिस्प्ले. मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए, मैक्सिमम 32 एंड इंक्रीमेंट 4. ओके, यू हैव टू क्लिक द एवरेज पॉइंट्स. इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 थी और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 32 है. इसको 32 करेंगे और इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट 4 का हो रहा है. इंक्रीमेंट जब भी आएगा तो उसके साथ हमारे पास जो है वो मेजर के ऊपर हम करेंगे. अगर डिक्रीमेंट होगा तो वो माइनर के साथ आएगा. इसको ओके करने के बाद हमारे पास ये चार्ट ड्रॉ हो गया. उसको कहते हैं प्लेस द चार्ट टू द लेफ्ट ऑफ द बुलेट ऑन द स्लाइड विद द टाइटल इवेंट ड्राइव्स. हमें इसके ऊपर जाके इसको प्लेस करना है. इवेंट दिस इज अ इवेंट ड्राइव्स. इसको हमें इसके साथ लेफ्ट साइड पे प्लेस करना था. तो यहाँ से हमने इसको चार्ट को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इस पर पेस्ट कर दिया.
point is no words in the chart are split or data labels are fully visible within the chart and its content do not overlap in any slides are okay done. Print only the slides as a full page slides in a landscape orientation. Okay, then format the bullets on slides 3 4 5 एंड 6. हमें स्लाइड नंबर 3 4 5 6 पे जाना है और डिस्प्ले करना है नंबर लिस्ट जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू ईच बार इन असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 एंड 6. तो स्लाइड नंबर 3 4 5 एंड 6, दिस इज अ 3 एंड सेलेक्ट दिस एरिया और यहाँ पे हमें जाके इसको नंबरिंग पे सिलेक्ट कर देना है. सॉरी, ये हमारे पास नंबर्स में आ गए 3 4 एंड 5 सेम एज इट इज. यहाँ पे नंबर्स में आएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नंबर्स पे कर देंगे एंड 6. ये हमारे पास नंबर में डिस्प्ले हो गया. ओके जी, save this presentation, print the presentation as a handout with 6 slides to the page. ओके, और इसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट था वो ये था, all slide must have a consistent layout and formatting. तो आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास ये वो जो चीज़ है, आप इसको आप आ जाइए व्यू के ऊपर, स्लाइड मास्टर के ऊपर आ जाइए और हमेशा से इसको आपने इसको ड्रैग करके नीचे प्रेस कर देना फॉर कंसिस्टेंट लेआउट. और यहाँ पे आपके पास ये जो मास्टर स्लाइड का व्यू है ये आपके पास यहाँ पे टाइटल आएगा. तो इस तरह ये एक कंसिस्टेंट लेआउट बन जाएगा. तो सॉरी, इसको हम चेक कर लेते हैं ज़रा. मास्टर स्लाइड का काम हमेशा आप लोगों ने स्लाइड नंबर 1 पे करना है. ओके, व्यू देख लेते हैं ज़रा इसका नॉर्मल स्लाइड्स के ऊपर. तो अभी ये जो है, जो हमारी स्लाइड नंबर 1 है ये सही तरीके से नहीं आ रही. अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6. गॉट इट. ये हमारे पास ओके हो गया, कंसिस्टेंट लेआउट हो गया. देन एट द एंड ऑफ द स्लाइड्स print the presentation as a handout with 6 slides to the page. हम इसको प्रिंट आउट कराना है, फाइल पे जाएंगे तो प्रिंट कर देंगे या Ctrl+P करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. यहाँ पे फुल पेज स्लाइड्स पे आने के बाद आप यहाँ पे 6 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये हमारे पास जो है एक पेज पे 6 स्लाइड्स डिस्प्ले होना शुरू होंगी.